ना पसंद नहीं फरमाते हैं। सर, तो मैं ये आपकी देखें, बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। अच्छा, चलें। If I've got you correctly, if I've got you saying that law is not only the act of the parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, Sir. ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I am not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I am trying to assist your lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question. Please, lordship. Where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My lord, not a law? in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically but about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8. And judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules,
Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका argument ले लिया जाए तो इस law expression से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's conclusion. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the Constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law because you this is act of the Article 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the Parliament. It comes out of the scheme of the word law, and there are other sources of law. How it is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that
to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that Article 141 and 142 Article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. But And what- under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this My law? lord, Because Article we are going one- to develop a new jurisprudence No, my lord. in this case. The Article- third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament. No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी the साहब अगर Majlis Shura, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, तो उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है। सर, लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर आगे एग्जांपल, पढ़े ना, सप्लीमेंट्री पावर्स भी दे सकता है। सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं ये बहस है, आप ये कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किए जा ठीक रहे हो हैं। गया, तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं है, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि सर, नहीं। आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं नो बना तो सर मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता। देखें ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी ये मामला हल हो सकता है। एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है। उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है। अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में। एक कानून ऐसा हो सकता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है। आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा। सर, दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया, मैं आखिरी No, लाइन sir, की बात- मुझे आपने पढ़ ली है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. वो आगे इसके भी ऊपर मिला तो के- फुल स्टॉप है। इसको पूरा पढ़िए ना मिला के, Sir, इसको bits and pieces में jurisdiction- पढ़िए ना, then, bits सर and मैं pieces दोबारा में पढ़ूंगा पढ़िए तो वो इसको। कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप। नहीं, इसमें आगे जाके Jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. तो jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते। आगे आगे पढ़ें। चलें। With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme ये Court. बना सकते हैं ना Enlargement हो सकती है। आगे। बस Enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? नहीं, आगे पढ़े, You have अगर to आपसे read आगे it. पढ़े enlargement And the conferring thereon of supplemental powers. सप्लीमेंटल पावर्स पार्लियामेंट लगा सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सप्लीमेंटल पावर्स ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उस पर ये टिकट लगा के पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट हो सकता है। ये सप्लीमेंटल दो पावर्स pieces हैं। में वो ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को। पावर दे रहे हैं कि चार और वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ इम्तियाज जस्टिस साहब, इम्तियाज साहब, रिलेटिंग टू इम्तियाज साहब, jurisdiction and इसको powers. दो पीस में पढ़े ना आप प्लीज। देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. एक and के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power. 59 अगर इसको 1 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं तो subject to constitution and law.
तो ये वाली जो बात दो हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप अगर थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है। ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को along with article 141 और 142 और item, I'm just asking article 191 जो मेन इशू है article 191 का आ रहा है ना, कि वो लॉ ये वो नहीं है, ये कोई और लॉ है, बट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, whenever this law is used subject to, what is the interpretation of subject to? सर सब्जेक्ट टू का मतलब है कि जो लॉ में है वो रहेगा, इसके अलावा आपने कोई चीज बनानी है तो आपने रूल और भी आप बना सकते हैं। वो कह ये रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अलावा अनऑक्युपाइड डोमेन है तो फिर आप इसके अंदर कर सकते हैं कोई फ्रेमिंग ऑफ लॉ, और वो ये है कि आपकी बात का जवाब है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। चले कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट नहीं हुई, एंड लॉ, तो जो लॉ उन्होंने बनाया है वट एवर इट मे बी, जो आप अंडर चैलेंज है, yes. उस लॉ के मुताबिक आर्टिकल 191 में वो लॉ बन सकता है या नहीं बन सकता है? सर वो एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन के रेफरेंस से बन सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन बन सकता है, बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने चीफ एक्ट के तहत उन्होंने राइट ऑफ अपील दे दिया आपको जो नहीं थी, रिव्यू को स्ट्रॉन्ग कर दिया, कमेटी बना दी, तो अब इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन किधर है? ये है बुनियादी चीज आर्टिकल 184(3) में जो आपसे पूछ रहे हैं ना। दिस इज नॉट अ वायरीज अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, वेयर इफ यू कैन चैलेंज द वायरीज ऑफ द लॉ, बट हियर इट इज आर्टिकल 184(3). दिस इज द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ अपील इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, देन ओके। इम्तियाज साहब एक और चीज को गालिबन कंफ्यूज कर रहे हैं। There's a difference between इख्तियार of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. इस पूरे लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के किसी इख्तियार को नहीं छेड़ा, छेड़ दिया सर। It's only the Chief Justice and the Chief Justice is Supreme Court. सर इस लॉ ने आर्टिकल रूल 9 को ऑब्लिटरेट कर दिया है, और आपने इंडिविजुअल लेवल पे जजमेंट दिए हैं जहाँ पे रूल। एक सेकंड इम्तियाज साहब, सर आप मुझे एक सेकंड ना कीजिए, मुझे सुनने मेरी बात। सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार डाइल्यूट हुआ है ना सर। आपने चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपनी जजमेंट में कहा है कि रूल 9 जो है उसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती जब तक चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, और ये जजमेंट आने के बाद ये फील्ड अनऑक्युपाइड नहीं रही। वो जजमेंट एक फुल कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द अदर जजेस? नो। तो फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया? सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्शन। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं जो जजमेंट आपने जजमेंट दी है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी, और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है या बड़े? सर आप जजमेंट तो पढ़ लें। तो आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं, पर वो ये आपकी जजमेंट है। साहब आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं, जजमेंट कितने मेंबर्स की है? सर जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजंस देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बट रीजन। इम्तियाज साहब ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब, I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. सर अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में, अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना, जजमेंट को नहीं हाथ लगाया ना, ओहो उसका that law finished to an end and that is the authority of the parliament. सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो बात कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes. The distinction here is that
here, the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise submission I'm trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment... Please argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been... allow me to give your Lordship a judgment on the issue. Aap kitna waqt aur lenge? बस 15 मिनट और दे दूँ अगर क्वेश्चंस ना हो तो Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161 Malak Asad Ali case. PLD? Malak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Or the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your Lordship has already said. So, now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my Lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... The convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. Lord, so it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही ना असूल की बात हो रही ना असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है आप खुद बता ओके आगे आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक चलेंगे आगे बताएं जी सर आगे बढ़िए Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And the judgment है my Lord 2010, my Lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010
इम्तियाज साहब, सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब, सर दे दें, मैं तक पढ़ लेता हूँ, आप बता दें। Citation, एक second. this is a constitutional body and the Parliament Majlis-e-Shura, that is not, 2010 which has the क्या है citation? exclusive सर मैं power to make laws. इसी में SC हमारा PLD 2010 SC 483 विंटर का लगती है। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं कहाँ, किस पेज पे, किस पैराग्राफ में? The relevant page is page 535 535 and it goes on to page, नहीं, हमें रेलिवेंट पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? it goes on to page 536. The Supreme Court rules, देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules, पेज क्या बता रहे? पेज क्या क्या? page Supreme Court rules are on high pedestrian promulgated on the 536. basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules and Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद क्वेश्चन कहीं और हो, मुझे नहीं पता। सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में, ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536 हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अगली जजमेंट लीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. Check this case, my lord. PLD PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 519. 1997 PLD Supreme Court. जी सफ़ा 511, page 511, 511. 511, page 511, 511. Perfect. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with your proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. में look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड, दूसरा बता रहे हैं PLD? PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Dialman's case. 73, 79. 73. My lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68.
68 Then it is from 68 to 70, my lord. to 70. ठीक. And इसी proposition पे. His Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph 870 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त दें. ठीक. May I read, Lord? May I read? ये आपने कहा यही proposition. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My lord, page 70. जी. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare in law, what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes. Constitution होता है. Enabling लेकिन provision कहाँ पे है? just. It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161, 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189, जी. 247. यही बात है, अलग. Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution, any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 331. ठीक. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा. अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे. फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था. नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा. अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती. नहीं, ठीक है, आपने कहा भाई, डिपेंडिंग ऑन भाई हो सकता है गलत कहा हो, रूल 11. गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है. मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर. आई एम डन. मैं एक आपको कहीं जाना है? My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes. And then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's वैसे भी right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a. ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए. Do I have a choice?
I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप हम अभी will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं. 10 to 3. ठीक है? Grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं. ठीक है? आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं सवालों के जवाब. अगर फिर आपको सुनेंगे ये ना समझेंगे. I have just one request. मगर नहीं तो your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because देखिए I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus-Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is here. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है तो इनको जरा हम फारिग कर दें फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी इनको भी तसल्ली हो जाएगी. I am at you. शुक्रिया बहुत बहुत. यहाँ कोई मुताबिकत नहीं बनती. आपने जिस कानून को चैलेंज किया है उस पर बहस करें, मफरूज़ों पर ना जाएं. आप दलाइल देकर ख़त्म करें. पार्लियामेंट अगर बेहतरी लाना चाह रही है तो उसे समझ क्यों नहीं रहे. इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि अगर इस कानून की तौसीक हुई तो ये तारीख की बदतरीन कानून साजी होगी. और ये भी कहा गया कि कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मामलात में किसी और की मुदाखलत होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी. इम्तियाज़ सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बुनियादी बहस ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे. मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है और अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तों को मंजूर किया है. और समात इस वक्त जारी है. समात में वक्फा किया गया है 3 बजे तक. चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं और ये 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है. वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की गई. वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपना तहरीरी जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत में जमा कराया है जिसमें वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल शैम्पू. बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम. हेलो सर. अरे होने वाले दाम